गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ कनिष्क काला। तो मैंने अपनी फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी विंग से पूरी की। ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने ये पाया कि जो कोर्स डिज़ाइंड है फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी या पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के लिए, वो चाहे बी फार्म में हो, चाहे एम फार्म में हो, चाहे डी फार्म में हो या फार्म डी में हो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस बुक्स में हमें इतना डाटा मिल नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, जो यूजुअली हायर मार्क्स के लिए होते हैं, चाहे वो 15 मार्क्स हों या 10 मार्क्स हों, 20 मार्क्स हों, एज़ पर द एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो वहाँ हम अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, जिसके कारण हमारे जो इवैल्यूएशन है वो कम होती है। तो सो टू गेट रिड ऑफ इट, आई एम हेयर विद अ पीपीटी विच shares you the developmental process of pharmacy practice in India as well as on the global scale for M-Pharm as well as PharmD. होप ये एफर्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए और सेशनल्स के लिए नोट्स बनाने के लिए हेल्प आउट करेगा। आप इसको गो थ्रू होने के बाद अपनी रेगुलर बुक से नोट्स बना के एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस in India with a focus on M-Pharm and PharmD. Thank you. So first we would go through the background in which we will discuss the pharmaceutical care, the clinical pharmacy, and the different persons or different scientists of professionals which have contributed to the development of the pharmaceutical care or the patient-centric pharmacy. So first, coming on to the definition, the pharmaceutical care is defined as the direct responsible provision of medication related care for the purpose of achieving definite outcomes that improves the quality of life of the patient. The concept of pharmaceutical care and clinical pharmacy developed separately by different scientists in different time frames, but the basic concept of patient safety and ensuring rationality was common in both the concepts. The first mention of the pharmaceutical care was done by Michael in the year 1975, in which he described it as the patient care in which the insurance of rational use of drug, which ultimately contributes to patient safety, is ensured at all processes and at all times. Later, in 1980s, the Brody shared the amended concept of pharmaceutical care in which the responsibility of the outcome of the treatment, the pharmacotherapy and the patient safety is given to the patient. Lastly, in the year 1990, Helper and Strand considered that the clinical pharmacy was the precursor for the evolution of the patient-centric pharmacy, and it required some interventions to improve the implementation as well as to improve the patient safety and rationality. So they devised a concept of pharmaceutical care which specifies that the pharmaceutical care is the responsible provision of the drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient quality of life as well as the safety. तो अगर हम इसको ओवरऑल व्यू में देखेंगे तो इसका एक ग्लिम्स जो है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल केयर जो है वो आपका पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच है और क्लिनिकल फार्मेसी भी आपका पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, जो कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डेवलप हुए, बट इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो रैशनैलिटी और पेशेंट ओरिएंटेड सेफ्टी ही है। पहला मेंशन फार्मास्यूटिकल केयर का मिलता है आपको 1975 में माइकल द्वारा, 1980s में अमेंडमेंट्स के साथ ब्रॉडी द्वारा फार्मास्यूटिकल केयर को अमेंड किया जाता है, जिसमें फार्मासिस्ट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है फार्माकोथेरेपी और आउटकम के रिस्पॉन्स के लिए। लेटर हेल्प और स्टैंड अमेंड करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के गोल को, जो कि फार्मास्यूटिकल केयर कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि है रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ ड्रग थेरेपी फॉर अचीविंग डेफिनेट आउटकम्स एंड improve the patient quality of life. Now we will go through the origin of pharmacy practice. In this we will discuss it in two sections.
पहला जो होगा वो होगा हमारा बैकग्राउंड, और दूसरा होगा फार्म डी जो कि लिंक्ड है फार्मेसी प्रैक्टिस के डेवलपमेंट से। तो पहले में बैकग्राउंड में हमारा आ जाएगा कि कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस जो है, पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी जो है वो डेवलप हुई, किस किस फॉर्म में डेवलप हुई और वो कैसे इवॉल्व हुई फार्म डी तक, जो कि प्रेजेंट लेवल फार्मेसी केयर है पेशेंट सेंट्रिक ओरिएंटेशन में। So first and foremost we would go to the background. The clinical role of pharmacist developed as a solution to the societal needs for the safe use of medications, as a result of which the clinical pharmacy emerged in USA in the year 1960, and the model was the ward based pharmacy, which later transformed to the clinic based pharmacy services. Initially, the concept of clinical pharmacy sector was given by Professor Young Ken Jr. and L. W. Rising at the University of California in 1945. Later, in the UK hospitals, pharmacists who were practicing hospital pharmacy dedicated themselves as the forerunner of clinical pharmacy, having the expertise in the drug information and the drug advisors, and they set themselves as the precursors of the clinical pharmacy, and in the modern sense to extend the clinical pharmacy training aspects and skill aspects of the pharmacist. Now, after seeing the development of clinical pharmacy, we would refer to the origin of PharmD. Initially, the PharmD was an extension of clinical pharmacy training of pharmacists, which was formalized through the implementation of PharmD course, which was initiated in 1950 for the first time in the Southern California School of Pharmacy, Los Angeles, California. Later in 1960s, the PharmD program was initiated in other universities of USA to meet the patient-oriented care aspect of the pharmacy. Later, in 1989, and another developmental aspect in the improvement and development of PharmD program was that the Accreditation Council for Pharmacy Education notified standards for the PharmD program implementations. In the modern times, the PharmD program is running over in 30 countries. The course is necessary now for practicing the clinical based or patient oriented pharmacy in major countries like Canada, France, Italy, Spain, India, Pakistan, and Bangladesh, and many other countries also. Now we would discuss the pharmacy practice development in the Indian scenario. In India, the profession of pharma practice is still in an evolving stage. On a previous note, and in the previous decades, the pharmacy practice was being given through the postgraduate courses like Masters of Pharmacy in Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy, and other master level courses of patient oriented approach. The premier step was taken by the B.D. Miglani sir, who is known as the father of clinical pharmacy in India. Later, the JSS College also contributed for the development of clinical pharmacy and patient-oriented pharmacy in India. In the present scenario, the India is developing towards the formulation and improvement of the PharmD course, and the history of PharmD course in Indian setup goes back in the year 2008, when the Indian Union Ministry of Health and Pharmacy Council of India jointly introduced a 6-year Doctor of Pharmacy course. This course provided an intensive training in pharmacy practice and clinical pharmacy service areas to develop the patient-oriented pharmacy care in Indian setup. This was implemented basically in the southern part of India.
Other states also participated for the implementation of Pharm D, and the different states where the Pharm D was introduced included Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. The sole objective behind the implementation of this course of PharmD was to develop the workforce for the clinical oriented pharmacist, which could provide the pharmaceutical care to the patients on one side and also could meet up the PharmD regulations at the global level, which could be comparable to the PharmD curriculum of United States. Now we will discuss about the differences between the Master in Pharmacy course and the PharmD course. The basic difference in the two streams are based on the different parameters on which these are judged, which come under the category of the regulatory body first, the course structure, the type of thesis work given, and the allotments of the prefixes. बेसिकली जो एम फार्म जो डिग्री है वो आपकी क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्मा प्रैक्टिस विंग्स में मेजरली आती है जब आप क्लिनिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं या पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। जो एम फार्मा होता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो AICTE है और PCI इसको गवर्न करती है। ये जो कोर्स है एम फार्म का ये 2 साल का होता है, जो कि आपका बी फार्म जो बेसिक डिग्री है बैचलर्स की उसके बाद होता है। इसके साथ एक थीसिस वर्क इंक्लूडेड होता है जो कि आपको सेकेंड ईयर में करना होता है, और ये जो थीसिस वर्क है दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एन इंटर्नशिप, उसको इंटर्नशिप नहीं माना जाता है। दो इसमें आप हॉस्पिटल वर्ल्ड राउंड्स करते हैं, जो वर्क प्रोफाइल है वो इक्विवेलेंट है, पेशेंट मैनेजमेंट की स्किल्स आप सीखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे आप प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं अपने नाम पे, जो कि डॉक्टर का प्रीफिक्स है। नाउ वी वुड कम फॉर द फार्म डी। फार्म डी है वो आपका पोस्ट बैचलरेट फॉर्म में आपको मिलता है, PCI के थ्रू इसको कवर किया जाता है और ये 3 साल का होता है। प्रोजेक्ट थीसिस वर्क इसमें 6 मंथ्स का हो रहा है, और इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है जो कि इसको इंटर्नशिप अलाउ करती है। इसमें आपको इंटर्नशिप लगाई जाती है, दैट इज़ इक्वलेंट टू अ बेसिक एक्सपीरियंस इन द क्लिनिकल एंड, जो कि 1 साल की होती है। आपको प्रीफिक्स लगाने का एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है। दूसरा, ये 12th के बाद भी होता है फार्म डी, जो कि आपको सीधा फार्म डी की डिग्री मिलेगी। 6 साल का कोर्स होता है, और पोस्ट बैचलरेट जो है वो 3 साल का कोर्स होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फार्म डी and the M-Pharm professionals in the hospital setup or in the service areas where they perform. Basically, the PharmD and the M-Pharm professionals provide services which are patient oriented or are dedicated to ensure the rationality and to increase the safety of patient, which includes the steps like drug prescribing, drug distribution, drug information, pharmacovigilance, academic detailing, world round involvement, medication history review, medication order review, clinical review, and last but not the least, a minor amount of manufacture in the form of sterile and non-sterile formulations to increase the efficiency of the hospital and to decrease the load on the hospital for the procurement of the medications. So all overall the clinical pharmacy services provided by PharmD as well as the M-Pharm
students or professionals include all events which are involved in the management of the patient or the process which is detailed for the full treatment approach of the patient. With this, the pentagram of clinical pharmacy services in M-Pharm, B-Pharm, D-Pharm and Pharm D courses in the Indian setup, as well as their progress, development and the intervention in the Indian as well as global scenario is completed, and this PPT covers the whole syllabus which has been prescribed by PCI for the D Pharma, B Pharma, M Pharma clinical pharmacy, M Pharma hospital pharmacy, M Pharma pharmacy practice, as well as the Pharm D courses. The whole PPT covers a glimpse of the parts of the syllabus which has been प्रिस्क्राइब्ड बाय पीसीआई। तो इससे आपके जो पहला यूनिट है क्लिनिकल फार्मेसी का, वेदर इट बी फ्रॉम, चाहे वो डी फार्म का हो, चाहे एम फार्म का हो, चाहे बी फार्म का हो और चाहे फार्म डी का हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो सिलेबस है उसको ये पीपीटी कंप्लीट करती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, और अगर आपको ये एफ़र्ट मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए अगर आपको सजेस्ट होता है तो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। आप अपने व्यूज़ शेयर करें ताकि हम एक कॉन्क्रीट डिसीजन प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हम क्लिनिकल फार्मेसी को अपग्रेड कर पाएँ और स्ट्रेंथन कर पाएँ इंडियन सेक्टर में। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को और सभी अपने मित्रों को प्रणाम करता हूँ, एंड आई होप कि मेरा प्रयास आपको पसंद आए। धन्यवाद, प्रणाम।